News now from J&K. Kashmir-centric political parties continue to protest against the new voting rights for all living and working in Jammu and Kashmir. Now, the Bharatiya Janata Party and the PDP are now locked in a war of words, including the National Conference joining the PDP now, and with protests breaking out specifically in Jammu and Kashmir and in Jammu region. Now, Mehbooba Mufti, as you can see, Farooq Abdullah and other Gupkar leaders as well met in Srinagar today, threatening against any changes in Jammu and Kashmir's electoral rolls, as has been announced by the J&K Election Commission. Now, the PDP even staged protests in Jammu against the inclusion of non-local residents who have been living in the Union Territory and now are going to be added to a revised voter list. The Bharatiya Janata Party, meanwhile, has claimed that the Kashmir parties are bent on disturbing the atmosphere. People's Conference Ajad Lone has even said he's likely to go on hunger strike if the electoral rolls are changed. Farooq Abdullah, meanwhile, the NC chief and former chief minister as well of Jammu and Kashmir, has said they will be appealing to the national parties and inviting them to J&K, and they will likely have another meeting in the month of September. Remember, in the recent announcement of Election Commission of Jammu and Kashmir, after the abrogation of Article 370 and the state becoming a union territory, any Indian citizen living ordinarily in Jammu and Kashmir will be now allowed to cast vote, including employees, businessmen or laborers. Especially marginalized groups denied the right earlier. Now even also armed forces personnel in peace stations will be allowed to vote. All these are also, meanwhile, the guidelines that have been there of the Election Commission of India, which are now applicable to Jammu and Kashmir, has been applicable across India to any citizen of the country. Listen in now to the reactions that have been coming in since today morning. जो वोटिंग राइट्स इन्होंने खोल दिए हैं सबके लिए, नतीजा ये है कि अभी तक तो नंबर 25 लाख का है, मगर इसमें कोई क्लेरिफिकेशन नहीं है। 50 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 1 करोड़ भी हो सकता है। रियासत का जो तशख़्ख़ुस है वो ख़त्म होने वाला है। डोगरे की पहचान ख़त्म हो जाएगी, कश्मीरी की पहचान ख़त्म हो जाएगी। जो इनने कानून लाया है ये भी एक मुसीबत का घर बनेगी, क्योंकि हर एक को तो पहले पॉलिटिकल पार्टीज को हमारे पास प्रोटेक्शन नहीं है, इनके पास तो हर मजदूर को कैसे ये प्रोटेक्शन देंगे। हमें वो भी खतरा है कि उन पे हमला होगा, और ये इनको बहुत सोच के ये चीजें करनी चाहिए थी। ये जो प्रोपेगेंडा कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के नेता जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है। कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के लोग ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के हालात खराब किए जाएं, जम्मू कश्मीर को लहूलुहान किया जाए। कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जिनकी राजनीतिक जमीन जम्मू कश्मीर में खिसक चुकी है, नए वोटर्स के इस प्रोपेगेंडे के माध्यम से वो जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह करके यहां के हालात खराब करने की साजिश कर रहे हैं, जो हम नहीं होने देंगे।